Hello everyone, I welcome you all once again to EnglishYaari. So I hope that you are watching our previous videos. पिछली वीडियो में I told you about some tips that I followed to learn English and I hope that you all are benefiting from that video. So हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है that how I scored band 7.5 in IELTS exam. So first of all, let me tell you briefly about the IELTS exam. IELTS exam is a necessary exam that you need to give if you want to move abroad for your study. So IELTS exam is an English proficiency exam जहाँ आपको 4 मॉड्यूल्स के बेस पे इवेलुएट किया जाता है and that is writing, listening, reading and speaking. So like you need to excel in all the parts so that you can get a good band, and a good band score is like more than 7. So if you are scoring more than 7, so you will not face any difficulty in getting admission into any university or applying for your visa. तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन जस्ट 10 days आप कैसे 7.5 बैंड अचीव कर सकते हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि देयर आर पीपल और देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग 3 months टू स्कोर मोर देन 7 और 7.5 बैंड्स. पर आज की वीडियो में मैं आपको 4 टिप्स देने वाली हूँ जहां आप 10 दिन में 7.5 बैंड अचीव कर सकते हैं. So before jumping into the video, I would request you all to subscribe to the channel so that you get all the notifications side by side. Okay, so my first tip is that you should know all the evaluation criterias. Now, what are evaluation criterias? Evaluation criteria hota kya hai? So when we are appearing for any exam, it is just a language. English is just a language, but IELTS is conducted by British Council and IDP. So now in India, IELTS exam is just conducted by IDP. So they have some set of rules जहाँ वो evaluation criteria fix करते हैं कि इन criteria पे we are going to evaluate the student. So first of all, you need to know the evaluation criteria very deeply, very deeply. And if you want that I should make a video on the evaluation criteria of IELTS, you can comment below. So we can discuss all the evaluation criteria in detail. So my first tip is that study the evaluation criteria very deeply and then work on your skills so that you are fulfilling all their criteria. So I'll just tell you some of the criteria like your vocabulary, your organization of thoughts, and there are so many criteria. So first tip is that always go through the evaluation criteria set by the IDP before starting your preparation. Now let's move towards the second tip. So second tip is very important, that is practice. So practice is the key to success. Now you know all the evaluation criteria. अब आपको practice करनी है because now you have to sharpen your skills. Everybody knows English, हर किसी को English बोलना, लिखना, सुनना सब आता है, but you need to sharpen your skills according to the IELTS exam pattern. जब आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया एंड ऑल्सो यू नो द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, नाउ प्रैक्टिस इज द सेकेंड मेन थिंग एंड ऑल द टिप्स दैट आई एम गिविंग यू आर इन द सीरियल ऑर्डर. पहले आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को डीपली स्टडी करेंगे एंड देन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 10 days. 10 days में यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. इट्स very important. Now let's move to the third tip. So third tip is always make a habit to proofread your work. Now what is proofreading? Proofreading is checking your own work. It is very important. I'll give you an example. I wrote a thesis in my master's degree and it was checked by me like 5 times, 6 times. It was checked by my supervisor maybe 10 times, and it's been 2 years, and if I pick my thesis I can find so many mistakes because we are humans. We are going to make mistakes. These are manual errors. So always make a habit कि आप अपने काम चेक कर रहे हैं and very critically चेक कर रहे हैं. So you have to be very critical of your work. You have to check each word. You have to check each spelling, grammatical errors, everything, so that you do not give a chance to the evaluator to find your mistakes. आप अपने mistakes खुद ढूंढ के ठीक कर रहे हो. And always make a habit कि आप ये खुद करना try करें, because if you are getting it checked from someone, so they can do it very well, but at the end of the day एग्जाम के टाइम पे आपको ही प्रूफ रीड करना है. So make it a habit कि आप कुछ भी काम करें, so check it, proofread it and be very critical of your work.
So now let's move to the fourth tip. So the fourth tip is like be very consistent. बिकॉज आयल्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी सो यू आर गोइंग टू किल द फ्लो. सो बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर मैं एक राइटिंग टास्क स्टार्ट कर रही हूँ एंड इफ़ आई डू अ टास्क टुडे एंड इफ़ आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 week or maybe 4-5 days, so I'll forget everything that what was the evaluation criterias, how was I writing. जो एक chain of thoughts होती है that gets broken. So we develop a chain of thoughts because when you are doing a writing task, आपको examples चाहिए, you need good thoughts. So we are breaking the chain of thoughts. So don't do that. Be very consistent with your practice. Now let's move to the bonus tip. So this bonus tip is going to be very very helpful for you. So the bonus tip is that never get disheartened. और ऐसा होगा कि आपने पहली बार कोई मॉड्यूल अटेम्प्ट किया, मे बी आपके 40 में से 20 भी आए, 25 भी आए, एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पहले अटेम्प्ट में ही 40 में से 35+ आ जाए. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यू नीड नॉट टू गेट डिसहार्टेंड. अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे, लाइक एट द एंड ऑफ 9 days, 10 days, 8 days, आप 35+ स्कोर करना शुरू कर देंगे हर मॉड्यूल में, एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 7.5 और मे बी मोर देन दैट ऑल्सो. सो दीज आर द टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो. एंड द टिप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया स्टडी करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना काम प्रूफ रीड करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, यू कैन टेक एनीबडीज हेल्प और यू कैन वॉच आवर वीडियोज़ एंड यू कैन कॉमेंट बिलो कि नाउ what topic you want to make a video on. If you want IELTS related content, I can make videos on IELTS. You can tell me the specific areas. So these are all the tips and I hope these are going to help you. And if you have short time, आपकी deadline है university की या visa की, तो it will just take 10 days. Take 10 days, follow these tips, give your exam and you are going to score more than 7, maybe 7.5 or 8 also. So we'll end today's video and I'll be back very soon with a new video. Thank you everyone for watching.